हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हो? सब ठीक हो? मैं हूं राशिद मिर्ज़ा और मिर्ज़ा व्यूज़ पर आपका वेलकम करता हूं। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, बहुत बार रिक्वेस्ट की गई है। लास्ट वीडियो में एक भाई ने 5-7 कमेंट्स कर दिए कि ये वीडियो देखो, राइजिंग टाइगर, द नेक्स्ट राइजिंग टाइगर, बांग्लादेश द नेक्स्ट राइजिंग टाइगर। तो ये वीडियो थी जी, बहुत बार रिक्वेस्टेड है। तो चलिए देखते हैं वीडियो, उसके बाद बात करेंगे। तो आपने क्या करना है, अपना काम, चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका सपोर्ट का, और थैंक यू जो लोग पसंद कर रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं। बहुत सारा प्यार पाकिस्तान की तरफ से, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। सॉरी फॉर लेट। बांग्लादेश के बारे में बहुत लंबी लिस्ट आने वाली है, प्लीज स्टे विद अस। लेट्स गो। ब्यूटीफुल बांग्लादेश, ब्यूटीफुल ग्रीन, अमेजिंग, बहुत प्यारा, बहुत, इतना भी तारीफ करेंगे। नेचुरल ब्यूटी देखो, वाओ, वो टाइगर आ गया। A land of natural wonders, colorful festivals, and endless possibility, Bangladesh has a glorious history of resilience and valor. And the essence of this beautiful land can be found in the life and philosophy of one man, our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Almost 50 years ago, he liberated us from the shackles of oppression, taught us the true meaning of freedom, and envisioned for us a bright, prosperous future. Now, as the whole nation jubilantly celebrates the birth centenary of that greatest Bengali of all time, the future looks brighter than ever for Bangladesh under the prudent leadership of his daughter, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. Thanks to the government's enhanced priority on education, the last decade has seen the literacy rate jumping to 73%. Wow. Enrollment in primary schools has jumped to almost 100%. Besides, 14,000 community clinics have brought healthcare to the rural doorstep, rising the average lifespan of people to almost 73 years. Infant mortality has gone down to 31, while maternal mortality rate is now only 1.72 persons per thousand. For 4 consecutive years, Bangladesh has been at the top of the South Asian countries in ensuring gender equality as per the World Economic Forum ranking. The poverty rate has also decreased from around 40% in 2005 to 20.5% in 2019. In the fiscal year 2018-19, Bangladesh's GDP grew by 8.15%, which is one of the highest in the world. At the same time, per capita income has crossed $2,000 from $759 back in fiscal year 2008-9. Our exports have grown to almost 41 billion US dollars from 15 billion US dollars 10 years ago. Currently, Bangladesh is the second largest exporter of ready-made garments in the world. Meanwhile, our pharmaceuticals, leather products, food processing, and ICT industry are also making their mark at the global stage. Flow of remittance increased from $9.7 billion a decade ago to $16.5 billion US dollars in the fiscal year 2018-19. Flow of foreign direct investment has increased by almost 4 times in the last 10 years to reach 3.6 billion US dollars. Private sector investment has simultaneously increased by 5 folds in last 13 years, reaching almost 71 billion US dollars. Once dependent on food aid, Bangladesh has not only achieved food self-sufficiency, but also emerging as a food exporter. Currently, Bangladesh is the 4th largest producer of rice, 3rd largest producer of vegetables,
and the fourth largest producer of freshwater fish in the world. The power generation capacity has increased by 4.5 times to reach 22,329 megawatts. 94% people in the country now have access to electricity. More than 4,500 Union Digital Centers are bringing digital services to rural doorstep. The total number of mobile phone subscribers has crossed 161 million. Meanwhile, the number of internet users has increased to 96.2 million. After successfully achieving the Millennium Development Goals, Bangladesh is now working relentlessly to attain the Sustainable Development Goals. Bangladesh's unprecedented success is now being recognized by various global entities while earning the country accolades at the world stage. Back in 2015, Bangladesh became a lower middle income country as per the World Bank classification. Goldman Sachs has identified Bangladesh as one of the next 11 countries that has the potential to become one of the world's largest economies in the 21st century. According to HSBC, Bangladesh is likely to become the 26th largest economy in the world by 2030. Meanwhile, PricewaterhouseCoopers projected that Bangladesh has the potential to become the world's 23rd largest economy by 2050. पूरी possibilities है जी, पूरी possibilities. Wow. देखो सब लोग तारीफ कर रहे हैं. To boost up such huge economic progress, the government has also initiated various mega infrastructure projects. The country's longest bridge over the Podda River, Dhaka Metro Rail, Pyra Deep Seaport, Bangabandhu Space Satellite, and the country's first nuclear power plant in Rupur. These are just few examples of such mega undertakings. 100 special economic zones will be established across the country in the next 15 years to produce goods and services worth $40 billion and to create 10 million jobs. Meanwhile, 28 high-tech parks will be constructed to bring ICT export to $5 billion by the year 2021, while creating 2 million jobs. To bring all the modern amenities to the rural people, the government is also implementing the gigantic scheme My Village, My Town, a major promise of its latest election manifesto. Bangladesh has a young, energetic population with 34% of its people aged 15 and below, while more than 65% is of working age. Cashing in on that demographic dividend, Bangladesh now aspires to become a major player in the upcoming fourth industrial revolution. To make this country ready for that transformation, the government has put special emphasis on quality education, technology, digitization, youth, and decent job creation in its latest budget, as it is determined to create jobs for 30 million people by the year 2030. Despite all that has been achieved, Bangladesh is not resting. In line with the dreams of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, we are aiming to become a prosperous, developed nation and one of the top 20 economies in the world by 2041. Come, join us in our journey as we march beyond the dreams to emerge as the world's next rising tiger. No doubt, no doubt. Words Bangladesh next rising tiger है जी. नेक्स्ट राइजिंग टाइगर कह सकते हैं. इतनी ज़्यादा उन्होंने ग्रोथ की है. 8.5% की उन्होंने जीडीपी की ग्रोथ है ओनली 10 ईयर्स में. 8.5% माशाल्लाह. और लिटरेसी रेट, उनकी एक्सपोर्ट्स, गारमेंट एक्सपोर्ट, राइस एक्सपोर्ट, फिश एक्सपोर्ट, उसके बाद वेजिटेबल एक्सपोर्ट्स,
उसके बाद मेडिकल एसेसरीज, लेदर इक्विपमेंट्स, उसके बाद जो है वो है जूट है, उसके बाद साइकिलिंग है, इसमें सारी चीज़ें भी, आईटी के सेक्टर है, उसके बाद 100 इकोनॉमिक जोन है, और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ से कहाँ ले गए हैं। उनकी किसी भी फील्ड में आप देखेंगे कि गिरावट नहीं है, ग्रोथ है। इसको कहते हैं कि मैनेजमेंट प्लानिंग उन्होंने कैसे की है, करप्शन होने के बावजूद, हालांकि करप्शन है लेकिन फिर भी सैल्यूट है यार कि उन्होंने ऐसी मैनेजमेंट की है, ऐसी प्लानिंग की है कि कंट्री की जीडीपी ऊपर गई है, कंट्री की ग्रोथ ऊपर गई है, कंट्री की किसी भी डिपार्टमेंट में ग्रोथ नीचे नहीं गई। तो पाकिस्तान को उनके सीखना चाहिए उनसे। नेक्स्ट राइजिंग टाइगर शुड भी बांग्लादेश, और बांग्लादेश ही होगा रियल टाइगर। देख लेना आपने साउथ एशिया में आफ्टर 10 ईयर्स में उन्होंने कितनी ज़्यादा और तरक्की करनी है, पॉवर्टी को ख़त्म करना है। 20% पॉवर्टी रहेगी, 40% से ले डाउन आ गई है 20% पे, और ये 20% अभी आप 10 ईयर में ख़त्म कर देंगे, या मैक्सिमम 20 ईयर्स लगेंगे इनको पॉवर्टी ख़त्म करने में। और 2040 में और 2041 में उनका एस्टीमेट है और टारगेट है कि बांग्लादेश एक नेक्स्ट लेवल कंट्री होगा, नेक्स्ट लेवल डेवलप्ड नेशन होगा। तो डेवलप नेशन में शामिल हो जाएगा। ऐसे ही मेहनत करते रहे, ऐसे ही काम करते रहे, इससे भी अच्छा काम किया तो जल्दी बांग्लादेश जो है ना एक डेवलप नेशन के तौर पर सामने आएगा आफ्टर 15 to 20 ईयर्स। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है यार, ये वीडियो जो है ना देखने का मकसद है यही है कि मुझे बहुत ज़्यादा सजेस्टेड क्यों की जा रही थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की जा रही थी, सजेस्ट की जा रही थी कि ये जो वीडियो देखो लाजमी। और बहुत ज़्यादा ना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को भी उनके से सीखना चाहिए कि यार आपसे अलग होने के बाद 50 ईयर्स उनको अभी हुए हैं और वो कहाँ पहुँच गए हैं, एक स्टार्ट से शुरू करके वो कहाँ पहुँच गए हैं। तो शर्म करो, करप्शन को ख़त्म करो, पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म करो, और पुलिस, लॉ और जितने भी इदारे हैं गवर्नमेंट के, सब में करप्शन है। इस वजह से वो पॉलिटिशियंस ने बहुत लूटा है, और अब होप कि पाकिस्तान को भी अच्छे पॉलिटिशियन मिलें तो जाके पाकिस्तान भी तरक्की कर सके थोड़ी बहुत। लेकिन बांग्लादेश का यार इम्प्रेसिव है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, जितनी ज़्यादा तारीफ़ करूँ एक कम है। ठीक है, तो कितनी तारीफ़ करूँ, मैं हर वीडियो में मैं तारीफ़ करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा तारीफ़ या कम करता हूँ तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि जो फैक्ट्स हैं वही आपके सामने लाए जाऊँ। ये फैक्ट्स हैं, इसमें किसी कंट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने मेहनत की है, बांग्लादेश ने मेहनत की है, बांग्लादेश को उसको सिला मिला है, उसकी मेहनत का जो फल होता है ना वो मिल रहा है बांग्लादेश को। ठीक है, तो आगे भी उनको आने वाले दिनों में उनको मेहनत का फल मिलेगा। बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा गुड लक, बहुत ज़्यादा गुड लक और प्यार कि आने वाले सालों में बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स, बहुत ज़्यादा ग्रोथ और चेंजेस आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, और बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होंगे आने वाले 3-4 साल में। तो बांग्लादेश विल बी चेंज मोर, तो काफ़ी सारी चेंजेस आएंगी। तो आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए, और मिर्ज़ा भी को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप बांग्लादेश के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, और तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।